Hello friends, we are here with the second video on the sentence completion. Last time we have finished question number 1 to question number 52, and today we are going to finish. We are going to start from 53. If you are new, please subscribe and hit the notifications button so that you get notified whenever we upload a new video. Without wasting further time, we will simply begin with question number 53. Question number 53. The main objective of this dedicated institution is to dash poverty. The answer is alleviate. Question number 54. They demanded a lot of things, but he could not dash to grant them for want of funds. He cannot afford. ये वह खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे कम थे. Afford will be the answer. Question number 55. The little child was so excited that he could not dash the burning candle. Through past tense आ गया. Thrown फेंक चुका है. Drift does not make sense. Lights also does not make sense. The only word that makes sense is throw. सिर्फ throw यहाँ पर आएगा. Question number 56. Recently, Mr. Gunwant has dashed down as secretary of our cooperative society. Here, stepped will be the answer. Step down का मतलब होता है पद से पद छोड़ दिया है. Question number 57. The demolished unauthorized structure was again dashed in less than 2 days by a group of people. Erected का मतलब खड़ा कर देना. वो जो ढांचा गिराया गया था फिर से खड़ा कर दिया गया. Question number 58. Kindly dash me a leather bag and some money before I leave for my tour. Kindly provide me. Provide का मतलब मुहैया कराइए. कृपया मुझे एक लेदर बैग और कुछ पैसे मुहैया कराइए. The answer will be provide. Let's go to question number 59. Question number 59. The officer dashed all the facts and views and perused the file before giving the decision. The answer will be considered. सभी तथ्यों को, सभी नजरियों को मद्देनजर रखते हुए विचार किया गया, कंसिडर किया गया. Question number 60. The manager told the clerk that he was very much dashed for time and would clear the files next day. To be pressed for time, इस एक्सप्रेशन का मतलब है समय कम होना. Pressed for time will be in use here, so E is the answer. Question number 61. Yashwant has now made up his mind to study dash and achieve success in the ensuing examination. Yashwant has now made up his mind to study hard. The answer will be hard. Question number 62. Jayant will dash all necessary help to Vinayak's son in his studies. Jayant will render का मतलब होता है देना. Question number 63. There is an improvement in the health of Naina. She looks so cheerful now. The answer is remarkable. बहुत ज़्यादा improvement हुआ है. Question number 64. Almost all the rich, respectable and dash citizens attended the reception hosted by the industrialist. Prominent का मतलब होता है प्रभावशाली. Question number 65. The artisans are handicapped dash of the lack of availability of raw material. The answer is because. The artisans are handicapped because of the lack of availability of raw material. Because makes perfect sense. Question number 66.
He expects dash promotion in short time. The answer is to receive. He expects to receive promotion in a short time. Question number 67. We shall fail dash we are industrious. The answer is unless. यदि हम कर्मठ नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे. Question number 68. When I pay him tomorrow, he dash received everything I owe him. He must have. Must have का मतलब है उसे सब कुछ मिल चुका होगा जो भी मेरा उधार है. Question number 69. He is willing to make a concession dash the demands of his employees. The answer is 2. Question number 70. By this time next year, Manoj will dash his university degree in marketing management. Manoj will have taken. मनोज डिग्री ले चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 71. A group of high school girls dashed the highest peak of the Satpura range. The answer is scaled. Scaled का मतलब होता है चढ़ना. Question number 72. In his address to the villagers, the minister dashed certain measures being taken for improving the quality of life. The answer is highlighted. कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया. Question number 73. Ramesh's well-wishers went to extreme to dash his business reputation. अब obviously well-wishers हैं तो बढ़ाएंगे ही, खराब तो करेंगे नहीं. तो आंसर आएगा enhance. To enhance his business reputation. Question number 74. Every employee is expected to dash the interest of his organization. The answer is to protect. Work भी हो सकता था, but to work for the interest of his organization आना चाहिए था. अब for तो दे नहीं रखा, so obviously protect आएगा. Since for is not given, we cannot use work. So the only thing available to us is protect. Question number 75. Had he known about his bad health, he dash have taken adequate care. बहुत obvious आंसर है would. He would have taken adequate care. यदि उसे पता होता तो वो ध्यान रखता. Question number 76. It is not possible to complete this work without increasing the dash of deficit. The answer is the loss of deficit. Deficit का मतलब पहले से ही कमी होता है. Loss of deficit doesn't make sense. Gain of deficit also doesn't make sense. Extent यदि होता, T होता तो हम विचार कर सकते थे, लेकिन extent verb हो गया. Altitude ऊंचाई नापने के लिए आता है, तो हमारे पास क्या बचता है? The only thing remaining is magnitude. हम deficit की मात्रा नहीं बढ़ा सकते. The answer is it is not possible to complete this work without increasing the magnitude of deficit. 77. A special program to raise the standard of living of village folks has been programmed नहीं, worked नहीं, proposed नहीं, stalled नहीं. Stalled का मतलब होता है देरी करना. Launched makes sense. Question 78. A dash of elephant was ready to attack the lion. यहाँ पे सब कुछ सिमिलर सा लगता है. ग्रुप आप यूज कर सकते हैं, वैसे तो सही है, बट जनरली ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अलग अलग नाम होते हैं. जैसे मक्खियों के झुंड को हम बिजनेस कहते हैं, भेड़ियों के झुंड को पैक कहा जाता है, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, फ्लीट जहाजों के समूह को कहते हैं. तो बेहतर क्या है? हर्ड का मतलब यहाँ पे सुनना हो गया, HERD, हर्ड.
हर्ड हो गया एलिफेंट का झुंड. सो द प्रॉपर आंसर वुड बी हर्ड. क्वेश्चन नंबर 79. The advocate asked dash there were any witnesses of the defendant present. The answer is if. उसने पूछा कि क्या डिफेंडेंट का कोई विटनेस प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 80. दिस कोट इज डैश 3000 रुपीज. यहां पर हम सभी का यूज बारी बारी करके देख लेते हैं. विद एक्सेप्ट वर्थ, जिसका भी हम यूज करें सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है. कोट इज बॉट 3000 रुपीज नहीं, लीन 3000 रुपीज नहीं, स्टिच 3000 रुपीज नहीं, अवेलेबल 3000 रुपीज नहीं. दिस कोट इज वर्थ 3000 रुपीज. दिस इज वॉट मेक्स इट मीनिंगफुल. क्वेश्चन नंबर 81. An expedition of college students dash the highest point of the Himalayan range. Again, scaled. Scaled will be the answer. Question number 82. In his address to the senior managers, the managing director dash certain measures being taken for improving the office discipline. Again, highlighted. Question number 83. Ramesh's opponent went to extreme to dash his business reputation. रमेश's opponent, अब विरोधी है तो इज्जत बढ़ाएगा तो नहीं, और मेलिन का मतलब है टू टार्निश, गंदा करना, किसी की इज्जत को गंदा करना. क्वेश्चन नंबर 84. Every manager and every clerk is expected to dash the interest of his bank. The answer is protect. Question number 85. Had I known about the agenda, I dash have attended the meeting. Had I known, यदि मुझे पता होता तो मैं क्या करता. I would have attended the meeting. The answer is would. Question number 86. We have seen this sort of question before also. It is not possible to finance this project without increasing the dash of deficits of the current year. The answer is magnitude. Magnitude means amount. Question number 87. A special drive to increase the deposit base of public sector banks has been launched. Question number 88. Question number 88. A dash of trucks was kept ready to carry the food packets to affected people. Now, whenever there is a group of vehicles, it is called as fleet. A fleet of trucks was kept ready to carry the food packets to affected people. Question number 89. The doctor asked dash there were any relatives of the patient present. The doctor asked if there were any relatives of the patient present. Question number 90. This pen is dash 200 rupees. We have seen this type of question before in question number 80. This pen is worth 200 rupees. Question number 91. Several campaigns were dash for the eradication of illiteracy. Campaigns और programs के साथ usually launched ही आएगा. Several campaigns were launched, शुरुआत की गई. Question number 92. No sooner does he arrive than everyone stood up in his honor. स्टैंडिंग ओवेशन जिसे कहते हैं. क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम कहें एवरीवन स्टूड अप. क्वेश्चन नंबर 93. द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट. अब यहां देखिए, साइंड मतलब साइंड के साथ पास्ट टेंस वाला ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होगा.
द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर. कलेक्ट्स नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है. एक्सेप्ट्स नहीं, मनी तो मेजर तो किया ही नहीं जा सकता. रिसीव्स नहीं, पास्ट पार्टिसिपल. ओनली पास्ट पार्टिसिपल हियर विच मेक्स सेंस इज काउंटेड. द कैशियर काउंटेड द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 94. Question number 94. The famous singer dash his success to his father's guidance. The answer is attributes. Attribute का मतलब है श्रेय देता है. Attributes. Attributes का मतलब गुण भी हो सकता है, लेकिन यहां पे इस कंटेक्स्ट में इसका मतलब है श्रेय देना. Question number 95. Whom would you prefer dash the two of us? Here among will be the answer, because जब हम यहाँ पे among लगाते हैं तो ये सेंटेंस बनता है हम में से किसे प्रेफर करते हैं, हम दोनों में से. Whom would you prefer among the two of us? 96. After the accident, her performance was never the same as before. Question number 97. Now in 97, this thing cannot be more true for this chapter. The interpretation of every sentences should be done. Here it's not sentences, it's sentence. Sentence should be done in the dash and not in isolation. The answer is context. यहाँ पर इस चैप्टर में भी हर एक सेंटेंस का एक कंटेक्स्ट है, एक संदर्भ है. उस संदर्भ के हिसाब से ही आप शब्दों का चयन करें. ये बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 98. द एक्सीडेंट वाज वेरी एबनॉर्मल बट डैश नन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड वर इंजर्ड. बट लकीली, यदि कोई किसी एक्सीडेंट में घायल नहीं हुआ तो वो किस्मत की बात है, अच्छी बात है. द आंसर इज लकीली. Question number 99. When they took the decision, they did not realize that they were committing a problem, no. Provocation, no. Hazard, no. Sin, no. They were committing a blunder. Blunder, committing a blunder is the right expression. यही सही expression है. Question number 108. His first few attempts were dash, but ultimately he succeeded. His first few attempts were futile. उसके पहले कुछ प्रयासों का कोई मतलब नहीं निकला, निरर्थक प्रयास थे, या फिर कोई फल नहीं मिला. Futile. But ultimately he succeeded. Question number 101. Although the portrait does not look very dash, the skill and effort of the handicapped painter are appreciable. The answer here is attractive. Question number 102. The desire to possess something or the other is always dash in every human being. Dominated? Nahi. Embedded is the right answer. कहीं ना कहीं ये इच्छा दबी हुई होती है. क्वेश्चन नंबर 103. Those who invest money in big ventures are generally aware of the dash involved in them. The answer is risk involved in them. Because according to the context, risk is proper answer. क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर मनी इन्वेस्ट करता है तो वह रिस्क ही ले रहा है. क्वेश्चन नंबर 104. He doesn't participate in any activity. His dash bothers me. Carelessness? No. Adherence? No. Indifference is the answer. His indifference bothers me. उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. Question number 105. The guests were very well looked dash by our servants since we were not at home. अब looked after वी नो. लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल होता है, हमने इसे
उसमें भी कवर किया है इंग्लिश यूज इन ग्रामर, लुक्ड एट और लुक्ड आफ्टर के डिफरेंस को, आप वो वीडियो देख लीजिएगा. सो द आंसर हियर इज लुक्ड आफ्टर. नाउ वी गो टू different type of questions. Directions for question 106 to 110. In each of the following sentences, there are 2 blank spaces. Below each sentence, there are 5 pairs of words denoted by letters A, B, C, D, and E. Find out which pair of words can be filled up in the blanks in the sentence in the same sequence to make the sentence meaningfully complete. अब इसे सरल भाषा में समझते हैं. सेंटेंस है, सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स है. देयर इज अ सेंटेंस एंड इट हैज 2 ब्लैंक्स. देयर आर 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 5 जोड़ियां दी गई शब्दों की. अब हमें वो जोड़ी चुननी है जिसमें पहला शब्द यहां आए, दूसरा शब्द यहां आए. वी हैव टू चूज द पेयर in which the first word will be applied here and the word which comes after it will be applied here, and that sentence must make sense. So we begin with it. So people dash to work hard if you dash certain condition on them. The method will remain same. तरीका वही है कि आप वर्ड को ब्लैंक में डाल के देख लें और ये देखें कि क्या वो अर्थ दे रहा है, क्या उसका ग्रामेटिकली सही मीनिंग निकल रहा है. यू हैव टू पुट द वर्ड इन द ब्लैंक एंड देन यू हैव टू सी वेदर इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इट्स मेकिंग सेंस. द ओनली थिंग हियर मेकिंग सेंस इज पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड इफ यू इम्पोज सर्टेन कंडीशन ऑन देम. यहां पर जो एक चीज है वो जो अर्थ दे रही है वो यही है कि पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड इफ यू इम्पोज सर्टेन कंडीशन ऑन देम. क्वेश्चन 107. द रीसेंट डैश इन ऑयल प्राइसेस हैज गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल डैश टू द कॉस्ट स्पाइरल. द आंसर इज the recent rise in oil prices has given an unexpected additional twist to the cost spiral. Question number 108. Dash your colleagues for important decision making activities ensures their dash cooperation. Counseling your colleagues for important decisions making activities ensures their wholehearted cooperation is the answer. Because whenever you put B, C, D and E options in these, you will find that the meaning is weird. यदि आप A के अलावा बाकी सारे ऑप्शंस के जो वर्ड्स हैं उन्हें सेंटेंस में लगा कर देखें तो आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो कुछ अजीब सा है. यदि अजीब लगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही है. यूज योर सेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ईच डे, देन यू विल डेवलप अ सर्टेन सेंस. दिस सेंटेंस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है. और यू कैन डेवलप दिस सेंस बाय रीडिंग नॉवेल्स एंड सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. We'll go for question 109. The only way to ensure best output from your vehicle is to provide it a dash and dash maintenance. The answer is proper and timely maintenance. ठीक से और समय पे. Question 110. The issues could be dashed amicably only because of his dash handling of the situation. The answer is resolved and tactful. The issues could be resolved amicably. Issues को ठीक से निपटा लिया गया सद्भावपूर्ण only because of his tactful handling of the situation is the right answer. Now we see a different type of questions.
Directions for question 111 to 115. Pick out the most effective sentence from the given sentences to make the sentence meaningfully complete. तरीका यहाँ भी वही रहेगा. The way will remain the same. You take the sentence that is given and apply all the 5 options. Whichever is grammatically correct and makes sense, that will be the answer. Wash your hands cleanly before taking a bath. The sentence is grammatically correct, but it does not make sense. When you are taking a bath, why would you wash your hands? जब आप नहा रहे हो तो हाथ क्यों धोगे? Wash your hands cleanly after drinking water or tea. Immediately after taking bath. Before taking meals. As soon as you wear clothes. आपने पानी पिया है या चाय पी है तो उसके बाद हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं. नहाने के बाद हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा नहा के निकले. लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए ताकि खाना शुद्ध रहे और आप बीमार ना पड़े. द सेंटेंस इज मीनिंगफुली कंप्लीटेड बाय ऑप्शन नंबर डी. अर्थपूर्ण तरीके से सिर्फ ऑप्शन डी ही पूरा करता है. Wash your hands cleanly before taking meals. So the answer is D. Question number 112. Since the doctors had never come across these symptoms in the past, dash, it must be a very well-known disease. यदि well-known disease होता तो symptoms पहले देखे गए होते. The disease must be non-existent. यदि नॉन एग्जिस्टेंट है तो सिम्टम क्यों दिख रहे हैं? द आंसर इज द डिजीज मस्ट बी न्यू. यदि पहले कभी कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं तो बीमारी नहीं होगी ना. द आंसर इज सिंस द डॉक्टर्स हैड नेवर कम अक्रॉस दीज सिम्टम्स इन द पास्ट, द डिजीज मस्ट बी न्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. If a man is idle, it does not necessarily mean that he is dash. नॉट इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस होता है कर्मठ. यदि कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो वह कर्मठ तो नहीं होगा. नॉट इंटेलिजेंट, हाँ यह हो सकता है, क्योंकि यदि कोई आदमी खाली बैठा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम है. द आंसर इज बी. इफ अ मैन इज आइडल, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट ही इज नॉट इंटेलिजेंट. क्वेश्चन नंबर 114. क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे दे फेल टू रिपे देयर डेट बिकॉज. ए को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस में कोई सेंस नहीं है. दे हैड नॉट टेकन अ लोन. यदि कर्जा है तो उधार भी लिया होगा. इफ दे हैव अ डेट दे मस्ट हैव टेकन अ लोन. सो दिस इज रॉन्ग. दे हैड सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर अ ह्यूज सम. यदि उन्होंने प्रॉपर्टी बड़े रकम के लिए बेची होती तो उनके पास पैसे होते. दे वर वेरी रिच. यदि वो अमीर होते तो कर्जा चुका देते. दे हैड इनफ मनी. यदि उनके पास उतना पैसा होता तो वो पैसे दे ही देते. द आंसर इज दे फेल टू रिपे द डेट बिकॉज दे हैड नो मनी. पैसे थे ही नहीं. Question 115. He is gifted with the ability of concentrating on his studies dash even though there is nobody around. यदि कोई आसपास नहीं है तो कंसंट्रेशन करना इजी हो जाता है, कोई आवाज नहीं होगी. दिस इज रॉन्ग. Although there is no disturbance. Again, no disturbance. Only if his attention is distracted. If there is nobody to disturb him. The answer is E. He is gifted with the ability of concentrating on his studies, although there is a lot of noise around. कितनी भी आवाज हो वह पढ़ लेता है, यही उसकी क्षमता है. E is the perfect answer for 115th. With this, we finish sentence completion. The next topic will be sequence of words. In sequence of words, we will see how to arrange certain given words in a specific order to make sentences out of them. So with this, I will conclude today's video. If you are new, please subscribe. If you are already a subscriber, hit the like button.
and hit the notifications button so that you get notified whenever we upload a new video. Keep working hard and goodbye.